Okay, so here we have some questions. We have few ions together, right? And I want कि आप सब इसके क्या बनाएं? आप इसके मुझे formula बना के दिखाएं. For example, if you have two ions like this, if you have ammonium ion, which is a positive one, right? And if it is reacting with sulfate ion, which is 2 minus, right? So what will be the formula between these two, right? For example, if you have iron, which is 3 plus, and if you have like carbonate, which is 2 minus, so what is the compound between these two ions, right? Then, for example, if you have ammonium, which is 3 plus, and you have nitrate, 1 minus, so what is the compound between these two ions? Then you have like sodium, which is +1, and you have phosphate, which is 3 minus. So what is the compound between these two ions? And if you have like magnesium and it's reacting with sulfate, right? So just write down the compounds between these ions. And I want to check that आप compounds बना सकते हैं या नहीं. You know the rules or not. Just try it quickly, and I want answers on my WhatsApp. So I can check कि आप compound बना सकते हैं या नहीं. जल्दी से शाबाश. The question is, you need to form a compound. Write the formula of compound, right? सर जी बेटे. सर मैंने बीच ऑन किया, इससे पहले भी आपने कुछ पढ़ाया है? नहीं बेटा, ये जस्ट क्लास अभी स्टार्ट हुई है. ओके. Okay, so Hansla Tahir, very good. Okay, very good, very good. Yes, Hansla, your all formula are correct. Very good, bete. Okay, so I have answer from Parisha, and Parisha, your answer is your answer number 1 is correct, 2 is correct, 3 is correct, 4th is also correct, and 5th one is also correct. Very good, Parisha. All formula are correct. Okay, Mariam.
Okay, the first one is correct, second one is correct, third one, fourth one. No, you need to see the fifth one. What is the charge on magnesium right now? It is 2 plus, not 3 plus. Just make it correct. This is 2 plus. A beer, okay, ammonium. You need to write the 2 in subscript, not on the power, right? So NH4 bracket के बाहर जो आप 2 लिखोगी अबीर बेटा वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है? And you need to put 3 with carbonate as well, right? So you have not used brackets over here. We make it correct with it. Use brackets. Okay, Adnan, the first one is correct. Second one, you need to make it correct because it is 3 plus. ना तो carbonate के बाद जो आएगा वो 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, right? And जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो फिर हम लिखते नहीं है Mg2 और SO4 लिखने की जरूरत नहीं है. It is MgSO4. Make it correct, Adnan. Okay, Alishba, the first one is correct, second one is correct, third one is correct, fourth one, fifth one, all are correct. Alishba, very good today. Ayan, first one, second one, third one, fourth one, all are correct. Ayan, very good. Okay, so Masira, first one is correct, second one is correct, third one, fourth one, fifth one सही करना है आपने. मुसीरा जब दोनों नंबर एक जैसे होते हैं ना बेटा, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, फिर वो लिखते नहीं है फॉर्मूले में ना, वो एक दूसरे से कट हो जाते हैं. तो इट इज MgSO4 simple. You don't need to write 2 with both of them, right? Make it correct. Okay, so no सादा आपने बेटा गलती कर दी है. NH4 के साथ जब आप 2 लगाओगे तो ब्रैकेट में 2 लगेगा बाहर, H8 नहीं हो सकते, NH4 ट्वाइस होगा वो, ठीक है ना? आपको सही करें, ये बाकी सारे सही हैं, पहला वाला सही कर लें बस. Okay, Maha is here and Maha first one is correct, second one is also correct, third one is also correct, but we don't need to write 1 over there now, so you don't need to write AL1. It's fact that if nothing is written over there, that means this is the one, and the rest of all are correct. Just remove 1 from AL, right? Sebun Nisa is saying that first one is right, second one is right, third one is right, all are correct. Sebun Nisa, very good. Yes, every one of you, is that clear to all of you? Okay, so we have from Kiran as well. So Kiran is saying that NH4 twice. ये NH4 के बारे में आपने क्या लिखा बेटे? 2 के बाद आपने क्या लिखा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. इसके बाद एक्चुअली कुछ नहीं आएगा. Fe2CO3 सही लिखा हुआ आपने, AlNO3 सही है, बाकी सारे सही हैं. गुड. Okay, very good. So I'm writing over here on the screen. You can check this. These formulae are like you need to cross multiply the numbers, right? Only numbers. So this is NH4 twice SO4, right? And this is also cross multiplication. So it is Fe2CO3, right? And this is also cross multiplication of the number. We don't need to write 1 over here. It is NO3, right? And this is PO4, and when the numbers are same, we don't need to write the numbers down. It is MgSO4 simple. Is that right, Bacho? Any problem? No, sir. Yes, every one of you. Okay, then let's move towards mixtures. Now, what is mixture? What is mixture, Bacho? Mixture is actually, this is the physical combination of any 2 or more than 2 substances. This is actually the combination of 2 or more substances. So you can say that 2 or more than 2 or more than 2 substances. We cannot use the word element over here because the combination may be of 2 elements, or it may be of 2 compounds, or it may be 1 element and 1 compound as well. So you can say that this is actually the combination of 2 or more than 2 substances, right? That are physically
combined, right? That are physically combined. There is no bond between them. This is just a physical combination, right? The particles or the substances are just physically arranged, or they are physically combined, right? So any one of you want to share any one example of mixtures that you know? जी, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि कोई एक एग्जांपल मुझसे शेयर करना चाहे कि सर हमारे घरों में या हमारे आसपास या हमारे क्लासरूम में या हमारे रूम में कोई ऐसी चीज है जो कि मिक्सचर है आपके आसपास, तो क्या हो सकती है? जी, Sand and water. Sir, Ruabza and water. जी बताएं कौन बताएं? रोअफ़ज़ा इन Ruabza and water. रोअफ़ज़ा हो सकता है पानी के अंदर, और Sand and water. sand and water is not yes, you can say that it's a mixture, right? Fine. Even Oil the and substance is soluble or it is insoluble, they can be a mixture, right? Yes. और क्या कह रहे हैं आप लोग? Oil and water. Oil and water, you can say that this is also a mixture, right? And Zinc and copper. zinc and copper, you can say that alloys are mixture of metals. Very good. So you can even say that stainless steel, bronze, brass, cupronickel, these all alloys are actually mixtures. They are mixture of two or more than two elements. So you can say that they are mixtures. Very good. और कोई बताए मुझे? What about air, बच्चों? Is that a mixture or not? Yes. Air Yes, is a sir, it mixture. is. Very good. Air is a mixture of, you can say that this is a mixture of gases, right? What about बच्चों seawater? Seawater is mixture or not? Yes. Yes, we know that seawater is mixture because we know that seawater are actually water plus salt. So we can say that seawater is also a mixture. What about tap water? The water which is coming in your taps, what is that? It's that mixture or not? Yes. Yes, tap water is Sir. because minerals are there, they are also mixture. And what about distilled water, बच्चों? Distilled water क्या है? Mixture है या compound है? It is a compound because distilled water means this is a pure water. Very good. And what about crude oil? I think you all are aware about the word crude oil. So what is crude oil? Is that mixture or not? Compound. Crude oil is actually the mixture of hydrocarbons, right? So you will learn this in organic that crude oil is actually a mixture of hydrocarbons. So you need to keep remember this as well right now because this can be asked in exam during the question answers of this chapter, right? So you need to keep remember this. Now you can understand this that what is mixture because a lot of mixtures around you in the society and in your room and in your coaching and your class and whatever you are moving around. Ji bete. Sir, is boring water a mixture? Yes, there are a lot of minerals in the boring water, so it's also a mixture, right? खारा पानी आता है. अगर आप स्विमिंग पूल के वाटर की बात करें तो it is also mixture because we have a chlorine over there as well, right? Yes. So these are mixtures. Whenever the water is not pure, that means it is a mixture. Even if you are having the mineral water of like Nestle bottle, right? So it is also a mixture because a lot of minerals are added by the company in that. So it is also a mixture. It is not a pure water. Pure water is just like this distilled water, right? Distilled water is just like useless to drink, ना? उसमें minerals नहीं होंगे तो उसको पीने का कोई फायदा नहीं है. It is just like आपने पिया और वो as it is उसमें कोई body में आपको change नहीं आएगा, वो as it is जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है ना? तो you need to understand this कि यार प्योर वाटर हमारे लिए काम का है भी नहीं है, तो हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं पानी के थ्रू जो हमें मिलते हैं, तो वो मिक्सचर ही होते हैं, ठीक है? मिनरल वाटर जो होता है आपके पास वो मिक्सचर होता है. डिस्टिल वाटर फिर प्योर होता है, ठीक है ना? वो फिर कंपाउंड हो जाएगा, उसमें सिर्फ H2O होगा, राइट? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मिक्सचर बेटे एलिमेंट टू एलिमेंट भी हो सकता है. जैसे कि अभी एग्जांपल लिया हमने एलॉय की. यू कैन अंडरस्टैंड दिस, a lot of alloys we have in our syllabus, right? तो alloy जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द alloy, जैसे आपके पास कॉपर और जिंक का alloy है, ठीक है ना? So we have a lot of
copper molecules over there along with a zinc molecule over there. You can see this. This is the combination of two different size of atoms. This is actually showing you the presence of two different elements over there. This is the structure of alloy, right? So you can see this. This is actually the mixture of elements. You can see this two elements are mixing over here. Two elements are physically joined. Two elements are physically joined. So you can see this mixture can be made by two elements, right? Mixture can be made by two elements. And for example, if you talk about one of the other mixer, like अगर आप बोलें कि आपके पास है salt water, if you have salt water, yes, sea water, whatever you have. So if for example in a glass of water you have water molecules over there, आपके पास क्या है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, आपके पास दो हाइड्रोजन्स होती हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन के साथ आपके पास एक ऑक्सीजन अटैच होता है ना. तो दिस इज लाइक दिस कि आपके पास दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होता है. एंड अलोंग विद दिस यू हैव NaCl एज वेल. आपके पास वहां पर सोडियम और क्लोराइड भी मौजूद है फॉर एग्जांपल. तो दिस इज व्हाट यू कैन सी दिस इज एक्चुअली you have a mixture of two compounds. So you can say that even mixture can be made by mixing two compounds as well. Two compounds are physically combined. And also, bacho, even elements and compounds can mix together. And the very basic example for this is air. If you talk about air, so if in a container you are taking air, we know that in this air we have 78% nitrogen. So a lot of air is composed of nitrogen, and we know that two nitrogens together. So you can see this. This is element. Nitrogen is element, and 78% of air is actually composed of nitrogen. So this is nitrogen. And for example, if you talk about the second element in this is 21%, we have oxygen as well. So you can see this oxygen is also element over there. You will find oxygen over there as well, 21%. And then we have almost argon over there. वो जो 1% आपके पास एयर बचती है उसमें मोस्टली आपके पास आर्गन गैस होती है. वी नो दैट आर्गन अकेली होती है, तो आर्गन अकेली है तो वो भी आपके पास यहाँ पर आपको नजर आएगी. सेम एज इट इज आपकी जो एयर है वो कहाँ से उसका सैंपल लिया गया है. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर वो आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया से लेके लिया गया है तो सैंपल एयर का, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल. एंड फॉर एग्जांपल अगर वो किसी कोस्टल एरिया से लिया गया है तो डेफिनेटली वाटर वेपर्स आर आल्सो देयर, राइट. तो अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर कैसा होता है कि दो हाइड्रोजन के दरमियान आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. सो यू कैन सी दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल. यू कैन सी ओवर हियर वाटर इज अ कंपाउंड, राइट. तो यहाँ पर आपके पास वाटर भी है. और इफ यू टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो इफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो देयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, कार्बन और दो तरफ ऑक्सीजन. तो ये दो ऑक्सीजन और एक कार्बन फॉर एग्जांपल. So this is actually, you can see this is a mixture of element and compound as well. So you need to understand this, that mixture can be anything, right? It can be between two elements, it can be between two compounds, it can be even between compound and element, right? So you need to understand this, right? So you can say that element and compounds are physically joined. यहाँ पर आपके पास elements और compounds फिजिकली क्या हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं या कंबाइन हुए हैं, राइट. सो मिक्सचर कैन बी लाइक दिस. कुछ भी हो सकता है मिक्सचर में तो आप कुछ भी मिक्स कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने सैंड ली, ठीक है ना. अब सैंड में आपने फर्टिलाइजर मिला दिया, उसी के अंदर आपने जो है कुछ बीज जो है आपने फॉर एग्जांपल बीज डाल दिए वहां पर जो है ना. उसके अलावा आपने उसके अंदर पानी भी डाल दिया. अगर आप कहीं प्लांट उगाना चाह रहे हैं तो वो सारी चीजें आपने वहां डाल दी, तो वो भी एक मिक्सचर बन गया, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कुछ आयरन फिलिंग्स ली और कुछ आयरन फिलिंग्स को पानी में डाल दिया, उसमें आपने मिट्टी भी डाल दी, उसी में आपने सॉल्ट भी डाल दिया. तो इट इज आल्सो अ मिक्सचर. मिक्सचर कुछ भी हो सकता है. देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन देम, दे आर जस्ट फिजिकली जॉइंड विदाउट एनी बॉन्ड, राइट. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलें. So let's talk about some basic difference between mixture and compound, which is a very important thing to understand. What is mixture
and what is compound. So we need to understand these two definitions very well, so we can identify the substances according to these definitions. So what is the definition? Definition is two or more than two substances. They are physically joined, yeah, physically combined, right? So this is what this is mixture mean, right? And if two or more than two elements, if two or more than two elements chemically combine, so they are going to form compounds, right? There is a chemical combination. There should be a covalent bond or even ionic bond as well, because it is important to understand. So you need to understand that there should be a bond. There should be a there should be a chemical connection between the elements, right? Then the compound is going to be formed. This is the definition. And if you talk about the proportion, you need to understand this proportion. So we know that when compound form, so there is a combination of a fixed ratio, right? So element combining a fixed ratio. So you need to understand this, that elements always combine in a fixed ratio. If, for example, if you are producing water, so for the production of water, there must be two hydrogens and one oxygen, right? If the ratio is changed, then definitely the compound will be changed. So there should be a fixed ratio for the formation of any compound. For example, if you are producing like sulfuric acid, for this, it is must that you should have two hydrogen, you should have one sulfur, and you should have four oxygen. Without these fixed ratios, sulfuric acid is not going to form, right? So compound is always formed when there is a fixed ratio of elements, they are chemically combined together. But in mixture, there is no proportion, right? There is no fixed ratio. Any combination can be acceptable for the mixture, right? For example, आप घर में रोअफ़ज़ा बना रहे हैं पानी के अंदर, आपने 2 चमचे चीनी के डाल दिए और किसी ने 4 चमचे डाल दिए, तो सब अपनी मर्जी से चमचे डालते हैं चीनी के, जिसको जितनी ज्यादा पीनी होती है। किसी को जो है, किसी ने जो है ज्यादा रोअफ़ज़ा डाल दिया है पानी में, किसी ने कम डाल दिया है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। कोई कॉफी बना के पी रहा है, तो कोई ब्लैक कॉफी पी रहा है, तो कोई कैपुचिनो पी रहा है, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। कोई कॉफी में शुगर डाल के पीता है, कोई नहीं डाल के पीता है, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। तो मिक्सचर में कोई प्रोपोर्शन नहीं है, जो आपका दिल चाहे वो आप मिक्सचर बना सकते हैं। सो देयर इज नो फिक्स ratio, right? There is no ratio in the mixture, right? If you talk about the properties, so the properties of compounds are entirely different from its elements. For example, if you talk about sodium chloride, the sodium chloride is actually forming with this. For example, sodium chloride जो है हम लोग जो घरों में खाते हैं, sodium chloride वो सोडियम से बनता है और क्लोरीन से बनता है। And we know that sodium is highly reactive metal. You cannot even take this in your hand, right? You cannot take sodium in your hand because sodium is highly reactive, so it can even react with the moisture in your hand, and it will be explosive. बड़ा खतरनाक सा उसका एक छोटा सा जो है ना एक्सप्लोजिव जो है एक्सप्लोजन होता है वहां पर, और उससे क्या होता है, वो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स छोड़ जाता है उस जगह पर। आप उसको ठंडे पानी में भी डालेंगे तो इट कैन इवन रिएक्ट, इट इज हाईली रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव है कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना। और क्लोरीन, we know that, we all know that, we use chlorine in swimming pools, it used to kill the germs, right? Just think about it, if salts having these two properties, जो आपका NaCl है, वो NaCl में अगर धमाका हो जाता, या फॉर एग्जांपल उसको खाने से जो है जरासीम मर जाते, तो आप सोचें क्या आप इसको खाने में इस्तेमाल करते? आप बिल्कुल भी इसको खाने में इस्तेमाल नहीं करते। तो सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है, the formation of sodium chloride and the properties of sodium chloride are entirely different from its elements, right? जिस element से वो बना है, जिस constituent से वो बना है, उससे बिल्कुल अलग chemical properties हैं, उसकी physical properties बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। So you can say that the properties of the compound is entirely different from its constituents, right? So the properties
ठीक है भाई, तो अगर आप बात करते हैं जिसकी कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे वो बन रहा है। एंड और जो आपके पास मिक्सचर है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेंगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे जिसके अंदर वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल आपका आपने 5 ग्लास वाटर ले लिया, ठीक, 5 ग्लास वाटर लेने के बाद आपने जो है उसको एक कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट सैंड के अंदर आपने वो पानी डाल दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने उसी के अंदर सॉल्ट भी डाल दिया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने आयरन फिलिंग्स भी डाल दी, एंड इफ यू जस्ट move a magnet around that mixture, so you will find somewhere you can say that कि आयरन फिलिंग ज्यादा होंगी तो अट्रैक्ट ज्यादा होगा और कहीं कहीं वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। so you need to understand this कि यार हो क्या रहा है आपके पास। फॉर एग्जांपल जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मैं अगर यहाँ एग्जांपल करके दिखाऊं, आपके पास क्या है, आपने आयरन लिया और आपने सल्फर लिया, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है ना। आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं कहीं सल्फर पड़ा हुआ है, ठीक है, और कहीं कहीं यहाँ पर आयरन मौजूद है, ठीक है ना। तो अब जब इसमें आप मैग्नेट को जो है मूव कराएंगे, सो यू विल फाइंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स। तो कहीं कहीं ज्यादा आयरन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा मैग्नेट पर, और कहीं कहीं नहीं भी होगा ना। तो जितना आपने डाला है आयरन वहाँ पर उस हिसाब से मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। बट इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट दीज टू गाइस, सो यू विल सी दैट ये बनाएगा आपके पास आयरन फायराइड FeS, एंड its chemical properties are different from this। और आप इसके मैग्नेट लगाओगे तो देयर इज नो अट्रैक्शन, यहाँ पर मैग्नेट पे किसी तरह का आयरन अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो जो आयरन था अब वो कंपाउंड बना चुका है, अब यहाँ पर इस तरह की कोई अट्रैक्शन नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो you can write over here that the properties of mixture depends on its quantity, right? जितना ज्यादा फॉर एग्जांपल आप चीनी डालेंगे उतना ज्यादा मीठा होगा, अगर आप चीनी कम डालेंगे तो मीठा कम होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मिक्सर है वो डिपेंड कर रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पे कि आप उसमें कितना डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप खाने के अंदर नमक कम डालते हैं तो यू फील कि यार खाना में नमक कम है, नमक और डाल दें इसके अंदर ना, तो वो फील हो रहा है, बाहर फील हो रहा है। तो मिक्सर के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल अपना कॉन्स्टिट्यूएंट कम डाल रहे हैं तो उसकी फीलिंग कम आएगी, और अगर ज्यादा डाल रहे हैं तो उसका टेस्ट ज्यादा आएगा। तो दैट इज क्लियरली शोइंग यू कि मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप घरों के अंदर रमजानों के अंदर पकोड़े बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो पकोड़ा इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ मिक्सचर। तो अगर पकोड़े के अंदर आपने प्याज ज्यादा डाली है तो यू विल फील कि यार प्याज ज्यादा आ रही है इस पकोड़े के अंदर, और अगर आप उसके अंदर आलू ज्यादा डाल देते हैं तो उसमें आलू ज्यादा आएगा। चटपटा बनाना है तो आप मसाला ज्यादा डाल देते हैं, फीका बनाना है तो आप उसके अंदर मसाला कम डाल देते हैं। तो दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स जो कि आप उसको पूरा कर रहे हैं। तो मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो टेस्ट होता है, जो जो उसका कलर होता है, व्हाटएवर, वो सब किस पर डिपेंड करेगा, वो सब का सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर कि आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कितने डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी के अंदर आपने 4 चमचे चीनी डाल दिए और 2 चमचे नमक डाला है, तो डेफिनेटली जब आप उस पानी को चखेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा स्लाइटली सा मीठा होगा, नमकीन भी टेस्ट आ रहा होगा बट मीठा टेस्ट ज्यादा आ रहा होगा। तो अगर आप दोनों को मिक्स एक जैसा करेंगे तो उन दोनों का बीच का कोई टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है ना। और अगर आप नमक ज्यादा डाल देंगे तो नमक का टेस्ट ज्यादा आएगा। तो वट एवर you are adding, the proportion of the constituent will give you the properties of the mixture as well, right? Then there will be the separation method. You need to remember this कि आपके पास mixture जो है they can be separated by a physical method, right? You can use physical method. Mixtures can be separated by a physical method. And what are the physical methods? फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं बच्चों? फिजिकल मेथड्स आपके पास जो है फिल्ट्रेशन है, आपके पास डिस्टिलेशन है, आपके पास जो है एवापोरेशन है। यू कैन यूज मेथड्स। फिल्ट्रेशन अगर आप बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। फिल्ट्रेशन आपके पास एक प्रोसेस है, आप ये यूज कर सकते हैं इफ देयर इज एनी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे पानी में आपने मट्टी मिला दिया है तो मट्टी को अलग आप करना चाहते हैं, यू कैन डू फिल्ट्रेशन। एंड एवापोरेशन है इफ यू हैव अ सॉल्ट इन वाटर, तो जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो आप एवापोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द सॉल्ट्स आर लाइक
they are sensitive ना, जैसे आपके पास शुगर है तो शुगर थोड़ी सी सेंसिटिव है. If you want to remove sugar from the water, so उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप crystallization करना पड़ेगा. अगर आप evaporation करेंगे like heating till dryness, तो वो decompose हो जाती है, जल जाती है वो, ठीक है ना. तो उसके लिए आप crystallization कर सकते हैं, right? उसके अलावा you will have a simple distillation as well, fractional distillation as well. These all process are termed as physical methods of separation, right? So आप उन mixtures को separate कर सकते हैं इन processes से जो कि आपके पास mix हो गए हैं, physically combine हो गए हैं. So if you want to separate them, so you can use these methods, right? And if you want to separate compounds, so you can use compounds can be breakdown. Compounds can be breakdown by different methods. Yeah, breakdown by chemical attack. Yeah, by like electrolysis. You can even break the compound by electrolysis, by the electrical attack, right? And you can even do thermal decomposition as well. You can even attack by heat, or you can even attack by like electricity. So in these two processes, you are actually attacking the compound, and a compound can be break down. Like for example, if you have calcium carbonate, so if you heat this, so it can be break down into calcium oxide and carbon dioxide. And for example, if you have NaCl and you are passing electricity through this solution or molten solution of NaCl, so you will get Na and Cl2 as well. So you can break down compounds by the passage of electricity or heat. Is that right, Bacho? Yes, sir. Sir, Any problem to any one of you? सर ये इसका तो मतलब पूरे क्वेश्चन भी आते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर. जी वो चैप्टर बिल्कुल अलग है बेटे. डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें आप पढ़ेंगे, आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर ये पढ़ते हैं सारी चीजें. लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया आपके पास, नए सिलेबस में ये है आपके पास सिलेबस नंबर 12, राइट. उसके अलावा आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, और चैप्टर 3 में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन आप पढ़ते हैं. पूरा एक चैप्टर है और ये आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, एंड इट इज एसेंशियल फॉर योर एजीपी, राइट. सो राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीस टॉपिक्स. We are just talking about the separation methods. So mixtures can be separated by these methods, and definitely in the next chapter or after next chapter, we are going to discuss these separation techniques individually, right? We have chromatography as well, which is a very essential topic that we need to discuss, right? Everyone, is that clear to all of you? Yes, sir. Okay, then skill test number 2. Now you need to identify which one is element, which one is compound, and which one is mixture, right? So this is skill test number 2. It is also very important. You need to identify which of them are element, compound, or mixture, right? You need to identify these. For example, you have the first example is crude oil. It is very important. That is why I'm using this one. Then tungsten, right? Then steel, right? Then we have brass. We have distilled water. We have we have copper to sulfate. We have air as well. It is also one of the very important. We have seawater as well. It is also very important. Right? Then we have sodium chloride, aqueous. Then we have magnesium oxide. Yes, Bacho. Just identify which one of them is element, which one of them is compound, and which one of them
mixture. Just do it quick and send me on my WhatsApp so I can check.